Assalamu alaikum students, welcome to the week 6 video session 4. Let's start with the next we can say part of the our session or this lesson plan. This one is about students linked with the types of software requirements. Now, mashallah, आप लोग 8 semester में you know very well what are the different types of software requirements, and I hope so उनको properly आप फिर use भी कर सकें और implement भी कर सकें. Now, when we are talking about types software requirements types, so the different types of software requirements that can be functional requirement, non-functional requirement, and domain requirements. Now, what are the functional requirements? कौन सी होती हैं आपकी functional requirements, and what will be the non-functional requirement, and what will be the domain requirement? This is what we have to study right now. कि ये तीनों requirements क्या होती हैं? One by one we have to discuss what are the three different types of software requirement. Like when we are talking about functional and non-functional requirement. So what is functional requirement? Statement of services the system should provide, how the system should react to the particular input, and how the system should behave in a particular situation. एक सिस्टम कैसे perform करता है, how and what are the different types of input a system has to take, and how it will behave on a particular situation. That is about the functional requirement. Generally जिसको आप to some extent आप objectives के साथ link करते हैं, और functionality of the system के साथ link करते हैं, scope के साथ link करते हैं, या road map, how you have to follow the road map, what are the tasks you have to cover and all that, वो आपके functional requirement आ जाती है. Next one is about non-functional requirements. जी students, non-functional requirement में आगे हम examples भी देखेंगे, काफी डिटेल में इसकी diagram भी हम discuss करेंगे. Constraint on the services are functions offered by the system, such as timing constraint, constraint on the development process and all that, standards point of view and all that. जो भी आपके constraints हैं, ये जो भी limitations हैं, ये जो भी requirements हैं, जो आपने non-functional point of view से fulfill करनी है. So that can be about non-functional requirement. Next one is about domain requirements. Requirements that come from the application domain of the system and that reflect characteristics of the domain. Again, that comes from the application domain. It's very important. Most of the time, whatever you are doing, that must be within your domain, and what's the system, what's the product is, and from domain point of view, what's the basic characteristics of the domain, and as per the characteristics of domain, what will be the requirement of that, you can say, product or system. Accordingly you have to mention. So domain requirements are very important from your project point of view. Definitely you have to know what are the domain requirements, and you have to mention in your task and your project also. So next one is about when we are talking about functional requirement class. Functional requirement के point of view से मैंने ये एक example ली है, like it's about cryptographic system. When we are talking about cryptography, so there are different number of tasks we have to perform and we can perform, like encrypt the form content, compare the values, upload the file, and encrypt the files. So these are the four tasks, or these are the four objectives regarding yours, the product or system or application. आपको एक project दिया जाता है cryptography के point of view से, and these are the things that you have to, or these are the tasks. You can say this one is the 1, 2, 3, 4, 5, four tasks हैं जो आपने perform करने हैं. So this one is about your functional requirement. This is what you have to do from your. This one is the case diagram जो मैंने एक example के point of view से ली है. But these are the user requirement, we can say, and this one is about your functional requirement that you have to perform for the, you can say, this session point of view or for that specific functional requirement point of view. जो आपकी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज अबाउट, जो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी क्लास, दैट इज कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम. नाउ इट्स अबाउट रजिस्ट्रेशन सिस्टम. Generally this system, or this you can say project or application, is course registration system. So again we are talking about functional requirements. So course registration system की जब हम बात करते हैं, तो register the course, that is the first thing. Then you have to remove the course. So you have the option to remove the course when our data entry operator are just like जैसे हमारे data set के point of view से है, तो they have the option to register the course,
sorry, to register the course, then they can remove the course, and then course student registration, then can register the course, right? Course student registration, दोनों के point of view से ये आपका एक you can say task है, ये objective है जो आप perform करते हैं. So this one is again about functional requirement. That means how your system will perform. So ये आपके पास आ जाते हैं another functional requirement example. Now next one is about, again we are on video 4 session students, functional and non-functional requirements. Specifically जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है. It's the services are the statement of services. It's about reaction to a particular input and behave at a particular situation. What a system should not do, optional, right? It's up to you. And non-functional के point of view say like timing constraint, आपके constraint on the development process है, constraint imposed by the standards है, applicable to the entire system, not on the parts. Again, when we are talking about applicable to the entire system, not on parts, so yeah, it's not applicable to the if it is applicable to the entire system, not on the parts. So it's up to you. It's again non-functional requirement के point of view से आ जाता है. Now next one is about when we are talking about non-functional requirement students. So non-functional requirement के point of view से this one is the best diagram through which we can find out कि non-functional requirement क्या क्या है और क्या क्या हो सकती हैं. Like when we are talking about any product, so non-functional requirement के अंदर there are number of things like product requirement, organizational requirement, external requirement. ये सारी आपकी क्या आ जाती हैं, ये सब आपकी non-functional requirement है, like product requirement, organizational requirement, external requirement. Then we have to move onward like efficiency measure requirements, dependability requirements, security requirement. जब हम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर एफिशिएंसी, डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड देन यूजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब आपकी किसमें आ जाती है, नॉन फंक्शनल. देन जब हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं तो स्पेस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ये आपकी परफॉर्मेंस, ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी यू कैन से सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाती है. देन यू हैव टू मूव टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, so that can be environmental requirements, operational requirements and development requirements. ये हमारे पास आ जाती है. लाइक इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, again linked with the organization, operational requirement linked with the and development requirement linked with the organizational requirement. And last one is about external environmental requirements, right? Like regularity, ethical point of view से, जो हम business के point of view से चीजें कहते हैं, ये आपके basically हमने start में पिछले सेशन में हमने एक स्लाइड देखी थी, दैट वाज अबाउट बिजनेस लेवल, दैट वाज अबाउट यूजर लेवल, प्रोडक्ट लेवल एंड सिस्टम लेवल. सो ये आपकी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू सम एक्सटेंट डिटेल है. सो लेजिस्लेटिव लेवल पे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ लिंक करती हैं, अप टू अगेन लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सो ऑन. So this one is about non-functional requirement, और ये सारी you can say types of different requirements हैं. And again it's about the part of this session. So this one is about functional and non-functional requirement. Again non-functional requirement की different examples दी हुई हैं, like response time, capacity, growth, service levels, and service you can say agreements, maintainability, security, system management, legal and laws and legislation, application architecture, data architecture, technology architecture, network architecture. ये सब आपकी नॉन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है. ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, ongoing support, requirement, usability, location, delivery, deployment, requirements, development standards, and software configuration management. So software configuration management again, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी आपकी there number of set of examples are the types of non-functional requirement. So ये सब जब fulfill होती हैं तो we can say प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है. सो आई होप सो स्टूडेंट्स फ्रॉम फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्लियर होंगे. अगेन हम इस सेशन को थोड़ा सा लिंक करते हैं विद योर प्रोजेक्ट. लाइक आपने प्रोजेक्ट में फाइंड आउट करनी है व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट.
उनसे आपने गो थ्रू होना है कि आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या है। फंक्शनल में आपकी लिंक विद द ऑब्जेक्टिव, टास्क एंड ऑल दैट। नॉन फंक्शनल अप टू सम एक्सटेंट ये वाली सारी आपकी नॉन फंक्शनल होंगी। So you have to find out and you have to mention in your task also. And thank you so much students for this session. Next हम next slide में next video में start करते हैं. Thank you students.